Good morning, students of class 7. We are going to start your first chapter, integers, and you have known earlier that what are integers? The set of all positive natural numbers, negative natural numbers, and zero is called integer. In other words, you can say the set of whole numbers and negative of natural numbers are called integers. We are going to start your exercise, and there are some properties of addition of integers and some properties of subtraction of integers. Here you can see that if you add two numbers having same sign, that is both numbers having positive sign, then they are added and positive sign can be put. It means if you take 1 and you are adding 1 and 1, that is both are in positive sign, so the answer will be 2. If you are adding -1 plus -1, it means both having negative sign, and -1 and also plus into -1, both are added but sign will be negative. You have also known that the product of signs positive into positive is equal to positive, positive into negative is equal to negative, negative into negative is equal to positive, and negative into positive is equal to negative. You have to remind it later. Here some properties of addition of integers. First property, क्लोजर प्रॉपर्टी. आप इसको बड़े क्लासों में भी पढ़ेंगे, इस क्लास में भी आपको पढ़ना है. जैसे आप ले लीजिए कोई भी दो इंटीजर्स, तो दो इंटीजर्स का सम हमेशा और हमेशा एक इंटीजर्स होगा. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स will be a integer. It means if you add 2 and 3, 2 and 3 both are integers, and the sum is 5 and it is also integer. This is the closure property of addition of integers. And also in commutative property, if you take two numbers, you can add it in any sequence. That is, if you add A and B in this sequence, the result will be same for B plus A. That is 1 plus 2 will give the same answer as 2 plus 1. This is called commutative property. मतलब आप अगर क्रम बदल देते हैं तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबरों में होती है. जैसे आप ले लीजिए ए, बी और सी. ये सेम रिजल्ट देंगे ए, बी और सी में, लेकिन इसमें आपको दो नंबरों को एक साथ लेना है. अगर आप ए और बी को एक साथ ले लेते हैं तो ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर सी होगा, और यहाँ ए को ब्रैकेट के बाहर छोड़ेंगे, बी और सी ब्रैकेट के अंदर होगा. तो ये सेम रिजल्ट देंगे. आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं 1 plus 2 plus 3 is just same as 1 plus 2 plus 3. 2 1 3, 3 plus 3 6. Here 1 plus 2 3 5. 1 plus 5 is equal to 6. Existence of additive identity. आइडेंटिटी मतलब पहचान. अगर किसी इंटीजर में 0 ऐड किया जाए या 0 में कोई इंटीजर ऐड किया जाए तो उस इंटीजर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है. मीन्स आइडेंटिटी उसकी बरकरार रहती है. दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स.
एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का वो नंबर होता है जिसको अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट 0 आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -a + a = 0 मीन्स 5 additive inverse of 5 is -5 because when you add 5 and -5 it means 5 - 5, this result in 0. Similarly for addition, this is for addition and also for subtraction. There are some properties. Subtraction also hold closure property. If you subtract two integers, then the result will be integer. Subtraction will not hold commutative property. For subtraction, closure property a minus b is equal to c, that is a integer. For commutative property, a minus b will not be same as b minus a, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है और वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी। a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. And also there is one more property for subtraction of integers, that is property of 0. If we subtract 0 from an integer, the result will be that integer. These are the properties.